jurists, scholars and political leaders who sacrificed their time, energy and resources in a selfless manner for the betterment of Pakistan, whereas the Constitution of Pakistan is a living document that embodies the principles of democracy, human rights and rule of law, whereas the framers of the Constitution of Pakistan, under the leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, and with meaningful participation of all political leaders, worked tirelessly to ensure that the Constitution represented the aspirations of the people of Pakistan, whereas the 25 members of the Constitution Committee, along with all the members of the 5th National Assembly, who debated, discussed and voted in favor of the Constitution, are worthy of admiration, respect and gratitude for their contributions to Pakistan's constitutional history, which has laid the foundation of its progress and prosperity. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to pay tribute to the framers of the Constitution and to reaffirm our commitment to upholding the principles and values enshrined in the Constitution, whereas the Golden Jubilee celebration year of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is also an occasion to express denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise आप तशरीफ रखें अपनी अपनी कुर्सियों पे जनाब निशिस्तों पर तशरीफ फरमाओ जाएं सब लोग otherwise lent legitimacy to it and to reaffirm our commitment to protect the Constitution from any adventurism. Therefore, this convention resolves that the Parliament commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays homage to the framers of the Constitution who came from all walks of life, representing all provinces, socio, cultural and religious segments, for their vision, dedication and commitment to the people of Pakistan. Reaffirms its commitment to upholding the Constitution and the rule of law, and to ensuring that the Constitution remains a living document that reflects the aspirations and needs of the people of Pakistan. Salutes the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan for their dedication, commitment and vision in drafting the Constitution of Pakistan, which remains a beacon of hope and inspiration for the people of Pakistan. Expresses denunciation of all those who abrogated, subverted and suspended the Constitution and or upheld or otherwise lent legitimacy to it. Acknowledges and appreciates the hard work and sacrifices made by the members of the Constituent Committee of 1973 and the 5th National Assembly, and recognizes the invaluable contribution of Pakistan's constitutional heritage. Expresses its gratitude and deep appreciation for the outstanding leadership of the President of the Constituent Assembly, Honorable Zulfikar Ali Bhutto, Honorable Speaker Fazl Elai Chaudhary, as well as the Honorable Abdul Hafiz Pirzada, who chaired the Constituent Committee of 1973 with great wisdom, integrity and impartiality. Also recalls with gratitude the historic contributions in the service of the people of the country by stalwarts and leaders like the then leader of the opposition, Khan Abdul Wali Khan, Maulana Mufti Mahmood, Maulana Shah Ahmad Nurani, Mir Ghaus Bakhsh Bazinjo, Professor Ghafoor Ahmad, Khan Abdul Qayyum Khan, Mr. Mumtaz Doltana, Sardar Shaukat Hayat and others. Calls upon all institutions and citizens of Pakistan
to uphold the Constitution of Pakistan of 1973 and to honor the spirit and values of its framers who sought to create a just, egalitarian, and democratic society based on the principles of Islam and democracy. Declares that all the members of the Constituent Committee of 1973 and the Fifth National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan as the national heroes of Pakistan. Declares also that all those who abrogated, subverted, and suspended the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and or upheld or otherwise lent legitimacy to it will always find mention in the hall of embarrassment. Thank you, Tashrif Rakhen ji. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. जी कौन उठा जी एक दूसरी करारदाद है जनाब इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना को करारदाद पेश करने की दावत देता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया at this historic day with your kind permission I'd like to move a resolution to declare the old National Assembly Hall in the State Bank building Islamabad as the national heritage. This convention, while commemorating the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, states that whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the National Assembly from 14th of April 1972 to 26th of May 1986, briefly in 1993, and has been closely associated with the country's democratic traditions. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building served as the historic venue where the debates, discussions, and passage of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan took place 50 years ago. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed 3 prime ministers, 4 presidents, and 5 speakers, and 5 speakers, deputy speakers during tenure of the 5th, 1972, 6th, 1977, 7th, 1985, and 10th, 1933, National Assembly held there. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed gathering of Pakistan's first directly elected MNAs on the 14th of April 1972. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building witnessed adoption of the interim constitution of 1972 and the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. Whereas the State Bank building was also briefly the office of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. Whereas the National Assembly Hall in the State Bank building has been out of use for 3 decades and is in state of disrepair and is in dire need of restoration to preserve it for future generations. Whereas the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building will not only preserve a significant piece of Pakistan's history, but will also provide a fitting venue for the nation's parliament to convene and foster greater awareness and appreciation of our democratic traditions and institutions. Therefore, this convention unanimously appreciates the efforts of the Honorable Speaker in retrieving and restoring the original portrait of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the State Bank building
and redisplaying in the National Assembly Hall, Parliament House, on the occasion of the 75th anniversary celebration of Pakistan and Parliament held in August 2022, declares that the National Assembly Hall in the State Bank building in Islamabad as a national heritage and recognizes its cultural and historic significance to Pakistan on the occasion of the Golden Jubilee celebrations of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, directs the relevant government agencies to take immediate steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building to its former glory and ensure that it is maintained in good condition for the posterity. Resolves that the National Assembly Hall in the State Bank building be used for at least one session in a parliamentary year as a venue to commemorate our democratic traditions and to reinforce the values that underpin our nation's political system. Further directs that a report on the progress made in the restoration of the National Assembly Hall in the State Bank building be submitted to the National Assembly before 1st of August 2023. Calls upon all stakeholders, including civil society organizations, cultural institutions, and the general public, to support the restoration and preservation of the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage. The Convention urges all members of the National Assembly to support this resolution and take the necessary steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage and fitting venue for the nation's parliament to convene. Thank you, Mr. Speaker. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. मैं वफाकी वजीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा को करारदाद पेश करने के लिए दावत देता हूँ. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, मैं रेजोल्यूशन पेश करने से पहले बहुत मुख्तसरन आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ. तमाम वो कमेटी के मेंबरान जिन्होंने आज ये तारीख़ी दिन लाया कि हम पहली दफ़ा फॉर्मली पार्लियामान से ये करारदाद पेश करते हुए पाकिस्तान के निसाब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, जमहूरी इक़दार को, जमहूरी रवायात को और दस्तूरी निज़ाम के निसाब को किताब में शामिल करने जा रहे हैं. और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये तारीख़ी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन आज तारीख़ी दिन इसलिए भी है कि हम तारीख़ की जो सिमत है उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं. और वो तारीख़ जो हकीकी तारीख़ पाकिस्तान की आवाम से छुपाई गई, वो हम अमानत के तौर पर निसाब के अंदर उसको इनकलकेट करके, उसको इंक्लूड करके हम आज ये करारदाद पेश कर रहे हैं. और ये जो सफ़र सरदार अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असम्बली ने पार्लियामेंट्री स्टडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करके किया था, आज उसका एक तारीख़ी पहलू जो कि अनफिनिश्ड टास्क था, जो उस वक़्त उनके नज़रिए का, उनके विजन का हिस्सा था, आज उसको मुकम्मल किया जा रहा है. और इसी तरह पहली दफ़ा यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स जिनकी तादाद आज 250 तक हो गई है, जो बच्चे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पार्लियामान में आकर इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद जो उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी अवेयरनेस रेजिंग में एडिशन होती है, वो भी जो एक सफ़र का आगाज़ स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक ने किया था और आपने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया है. मैं इसमें आपको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ. और ये आइन की किताब जिसको आज 50 इयर्स गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, जिसका सफ़र 2014 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सेक्रेटेरिएट पार्लियामान में बनाकर वो सफ़र का आगाज़ किया था, जो तमाम फंडामेंटल राइट्स को देखता है, उसको भी निसाब में शामिल किया जा रहा है. और इसमें मैं आपकी इजाज़त से ये रेजोल्यूशन पेश करती हूँ. रेजोल्यूशन का प्रीएम्बल शामिल करते हुए मैं ऐवान से गुजारिश करूंगी कि ये बहुत ही तारीखी लम्हा है जब मुल्क के निसाब में ये शामिल किया जा रहा है. दिस कन्वेंशन यूनानिमसली रिजॉल्व्स एज फॉलोज. Constitution and democratic civic education shall be made
a compulsory part of the curriculum and educational activities of all schools, colleges, universities, and training institutes of police, bureaucracy, and the law enforcing agencies under the control of the federal government. The fundamental rights enshrined in the Constitution of 1973, along with an unbiased account of constitutional and democratic developments in Pakistan, shall be included in the textbooks of all relevant subjects like Pakistan studies, history, social studies, mathematics, Urdu, English, or any other taught in the schools, colleges, universities, in the schools of the federal government. Extra and co-curricular activities at the educational campuses shall privilege themes related to parliamentary democracy, fundamental rights, and constitutionalism in Pakistan. The public service broadcasters and independent private media under their public service obligations shall devote a fair amount of time to expand the understanding about the Constitution and its relevance as a vibrant contract between the citizens and the state. The provincial governments shall reach out to the people of Pakistan to raise the awareness about the importance of the Constitution and to encourage its preservation and protection. This House resolves to uphold in letter and spirit the constitutional provision under the 18th Constitutional Amendment, under which the subject of education has been devolved to the provinces. Therefore, the House urges the provincial governments to take necessary actions and do the needful. Recognizing that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is the basic document governing the structure and polity of the state, and this is crucial for the future of Pakistan and its people to maintain the continuity of democratic governance embedded in the supremacy of the Constitution. Acknowledging that the democratic civic education is an important instrument to provide necessary knowledge, historical context, and development necessary skills to actively and effectively participate in the pursuit of democratic governance. Mindful of the fact that a significant percentage of the population of Pakistan, particularly the youth, do not have access to formal education and are not fortunate to learn about core concepts like constitutionalism, federalism, and representative parliamentary institution. Endorsing the joint communique of the 17th Speaker Conference, April 15, 2014, Islamabad, that the suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy. Whereas the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, adopted on April 10, 1973, serves as the supreme law of the land and the cornerstone of the democratic framework of the country. Whereas the 50th anniversary and Golden Jubilee celebrations of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provide an opportunity to reflect upon its significance and promote greater understanding of its provision among the citizens of the country, especially children and youth. The federal government shall urge all provincial governments and the governments of the federating units to implement this resolution and ensure that the courses on the importance of Constitution and a study of its salient features, specifically those relating to human rights, women, minorities, children, due process, and international human rights obligations, and the trichotomy of powers are including in the curricula of all educational institutions in the country. Thank you, Janaab Speaker. The question is that resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद साहब का, जनाब अंस नूरानी साहब का, जनाब चौधरी सालिक साहब का, जनाब अमीर हैदर होती साहब का, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहबान का, सिंध के वज़ीर आला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर साहब का
और ख़ास तौर पर 1973 की आईनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा हूँ कि आपके खिताब से वक़्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। इंशाअल्लाह इसका अजाला जो है 10 मई के बैनुल-अक़वामी आईनी कन्वेंशन में किया जाएगा। इस कन्वेंशन में स्पेशल चिल्ड्रन भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही मैं तमाम शुरका का, तमाम ख्वातीन व हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। अब हम इसका इख्तिताम करते हैं और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का जो है इजलास होगा। बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब से मेरी मौलाना असद महमूद। और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ से दरखास्त। बातचीत करने से पहले कोई शराइत ना रखी जाए। अपोजिशन को शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है। आइन को कुछ नहीं होगा, ना ही किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बहरान नहीं संभाल सकेगी। अस्कुद नोटिस में 200 लोगों को कराची से लाकर गवाह बनाने की कोशिश की गई। हमारे हाथ साफ थे, इसीलिए कुछ साबित नहीं हो सका। हमने कभी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आसिफ जरदारी का कौमी असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। हमने एक नहीं 3 आमरों का मुकाबला किया। हर आमर जाली सियासतदान खड़े कर देता है। कुछ जाली सियासतदान और कठपुतलियां आज भी पीटीआई के झंडे तले जमा है। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का मतलब ये नहीं साजिशें खत्म हो गई। सोचा था जमहूरियत कामयाब हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज तक चल रही है। आइन की गोल्डन जुबली पर जरूरी है साजिशें सामने लेकर आए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में इजहार ख्याल। मैं और मेरा इदारा आइन के साथ खड़ा है। आइन की किताब पाकिस्तान की पहचान है। चीज़ों को कानूनी तरीके से देखते हैं, सियासी तरीके से नहीं। अदलिया का काम आइन और कानून के तहत जल्द फैसले करना है। पार्लियामेंट में जो सियासी बातें की गई उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। आइन मुख्तलिफ आमरों का सामना करने के बावजूद आज भी जिंदा। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। आइन में मुख्तलिफ औकात में तरामीम की गई। बसा औकात आइन पाकिस्तान को रीराइट किया गया। आइन के तहत हुकूमत हासिल की। मालूम नहीं था इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मिलकर चैलेंजेस का सामना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। आइन बनाने वालों को सियासी दुरंदेशी पर खिराज तहसीन पेश। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में करारदाद कसरत राय से मंजूर। शहबाज शरीफ ने करारदाद पेश की। आईने पाकिस्तान में तमाम रियासती इदारों के फ़राइज़ वाज़ेह तौर पर दर्ज। हर साल यौम दस्तूर 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। करारदाद का मतन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर करवाया जाएगा। अदालती इस्लाहात का बिल मंजूरी के बाद दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। आरिफ अलवी ने 10 रोज में दस्तखत ना किए तो ये अस्कुब कानून बनकर लागू हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। इलेक्शन एक्ट में तरामीम का मुतालिबा। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरामीम की जाए। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार दिया जाए। राजा परवेज अशरफ को लिखे गए मरासले का मतन। इलेक्शन
इलेक्शन अखराजात बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। फौरी इलेक्शन का इनेकाद कौमी मुफाद में नहीं, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। शहबाज शरीफ को एक तबाहशुदा मैशियत वर्से में मिली। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। सियासत की बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब चल पड़े हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा बहुत जल्द साइन कर लिया जाएगा। इमरान खान ने 4.25 साल में मुल्क को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया। साजिशी अनासर अब भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। PTI क़यादत कौम में मायूसी और इंतशार फैला रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात बिल सेनेट में भी पेश कर दिया। ऐवान में चोर चोर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने मिनी बिल पर सेनेटर से तजावीज़ जुमेरात तक तलब कर ली। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात करवाए जाएं। सेनेट में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी। पंजाब में इलेक्शन करवाने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। करारदाद का बतन। अपोजिशन का बैक वक्त इंतखाबात की करारदाद की मंजूरी पर एहतजाज, शोर शराबा। सेनेट में वारदात डाली गई करारदाद को मुस्तरद करते हैं। इस करारदाद की हैसियत कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं। पाकिस्तान ने आइन के साथ चलना है, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। ये अदालतों पर हमलावर हैं। इस वक्त कानून साजी के नाम पर जुल्म हो रहा है। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की गरज परस। इनको बायकॉट करने की आदत पड़ गई। ये बैठकर बात नहीं करते, इन्हें सिर्फ कागज फाड़ने आते हैं। ये चले हुए कारतूस हैं। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में इज़हार ख्याल।